So, good evening, everyone. Warm welcome for the session. So, we are doing this particular book. If you can see the book, somebody wanted to just check. It's The Secrets of Karma by Mr. VJR3. So, this is the book that we are doing the reading for, and we are on chapter 3. We are starting chapter 3 today. We have covered the first two chapters. We are on page 83, 83. So if you have recently got the book, please read through the earlier pages. It's very simple stories with pictures. You will really find a lot of interest reading it. It's not a boring book at all. So we are on chapter 3, page 83, key number 26. The topic of this entire chapter is called Art of Living. तो एक चैप्टर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो पूरा जो होल चैप्टर है उसी का टॉपिक है आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका. द आर्ट ऑफ लिविंग इज अ वे टू an empowered life. It is an art that will transform adversity into an advantage and help you to discover opportunities for learning and growth in all situations of life. So just now we were discussing that recently we have been talking only about karma and all that, right? But why are we doing this? Karna kyun hai? Because it is going to empower you in your life. Because I'll just give you one sentence. I don't know why are things happening in my life. You feel so weak. You feel as if, helpless. आपके पास कोई ताकत नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता. But just the next line, I know why are things happening in my life. One of my karma is getting neutralized. Something big is coming in my life. I forgive the souls who have hurt me. I ask for forgiveness. What is happening? I am taking charge of my life. I am saying that I am responsible for whatever is happening in my life. I know whatever is happening of my karma. I know how to deal with it. I know I will do some donation. I know I will do forgiveness. I know I will do healing. I know I will do some positive karma to neutralize this, and my life will be sorted. Don't you think it is more empowering? दोनों छोटे छोटे लाइन में कितना फर्क था. I don't know what is happening in my life, and I know what is happening in my life. दोनों लाइन में कितना फर्क है ना? So this is why we are discussing karma. This is why we are going through this entire thing. There is usually something that makes you distressed and compels you to resist and react. But you will notice that what you resist persists, and you end up facing the same situation over and over again. The reason is you have not learned the lessons, and consequently, the karma remains unreconciled, making you attract similar events at another time. In this process, you waste much of your time and energy and lose your focus on things that are of greater importance to you. Therefore, instead of struggling with life, learn the art. तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कभी कभी हम जिंदगी में देखते हैं कि हमें कोई कोई चीज दुखी करता है, तकलीफ ले आता है हमारे लाइफ में, हमें इरिटेट करता है. अगर हम उस चीज को रेजिस्ट करेंगे या उसके खिलाफ सोचेंगे, वो चीज बार 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 घूम घूम के हमारे लाइफ में आती रहेगी. वजह क्या है? हमने उसके पीछे का जो लेसन है, वो चीज एक पहली बार हमारी जिंदगी में क्यों आई? हमें कुछ शिक्षा देने के लिए, हमें कोई लेसन देने के लिए. हम अगर उस लेसन को नहीं लर्न करके बार बार उसके पीछे भागते रहेंगे, उसे रेजिस्ट करेंगे, उसे सामना करने की कोशिश करेंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? वो घूम घूम के बार बार आएगी. Okay, so say for example, I'm a very stubborn person. If I tell you, see, I need 10 rupees from you, and you're resisting me, I will not give you 10 rupees. Go away. And every day you open your phone, I have 10 messages.
Please give my 10 rupees. I call you up. Please give my 10 rupees. I send you an email. My 10 rupees is due with you. And you are resisting it. I will not give you that 10 rupees at any cost. And I am also equally stubborn. I'll take that 10 rupees from you. What is happening? You and I are wasting our time, our energy, our effort. And I'm coming back in again and again and telling you, where is my 10 rupees? But if you sit down and you try to understand, why is Pyali after that 10 rupees? Is she trying to teach me a lesson? Is she trying to make me do a good karma? Is she trying to neutralize one of my past karma by paying that 10 rupee? What will happen if I give that 10 rupee? बुरा से बुरा क्या हो सकता है? मेरे वॉलेट से 10 रुपए कम हो जाएगा. That's the worst that can happen. Why don't I give that 10 rupee and solve this issue once and for all? So sometimes instead of struggling, we need to, get still. We need to observe what is going on, try to learn the lesson, try to observe what this thing is, why has this thing come into my life, क्या मुझे इससे सीखना है, क्या मुझे इससे समझना है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कब आया है. अगर हम एक बार स्थिर होके उसके बारे में सोचने समझने लगे और उसको उसके साथ फाइट करना, स्ट्रगल करना बंद कर दें, हो सकता है हम उसी चीज से now, therefore, instead of struggling with life, learn the art. A-R-T, art. So, if you see this beautiful, lovely picture here, for those who do not have the book, it is written art like this. A-R-T. So, what does this word art stand for? Learn the art. जिंदगी जीने का सलीका सीखना पड़ेगा. Acceptance, A. Responsibility, R. And tolerance, T. A-R-T. Acceptance, responsibility, and tolerance. When you master the art, when you master A-R-T, you will discover the hidden blessings even in extremely difficult circumstances and find long-term solutions to the challenges of life. तो हम जब इस आर्ट को, यानी हम एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस, जब हम ये तीन चीजें सीख जाएंगे अपने जिंदगी में, इसे अपना लेंगे, तो हमारी जिंदगी में बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगी. ओके, सो टुडे वी विल डू एक्सेप्टेंस. What does the word acceptance mean? And perhaps this was one of the biggest lessons of my life as well. There are seasons and reasons. No matter what you do, there will be certain conditions that do not change. Many things happen in life due to reasons beyond your comprehension. आप कितना भी कोशिश कर लो जिंदगी में, कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी. हर चीज हमारे समझ, हमारे फिजिकल एबिलिटी, हमारे सोच से परे भी हो सकती है कुछ चीजें. So when the universe is giving you winter season, if I say I hate winters, I want summer season now. No matter how much I cry, I crave, I do whatever, will the summers come? क्या मैं विंटर सीजन में एसी चला के बैठ सकती हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे तो एसी चला के बैठना है? आप बैठो, अगले दिन निमोनिया हो जाएगा. दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे. It is, I hate winters, I want the summer season, I want to put my AC on. You will only have pneumonia, है ना? So sometimes things happen beyond your comprehension. Sometimes your decisions appear to be utterly wrong, and you must bear their consequences for the rest of your life. However, rather than regret your decisions, it is better to analyze the root cause of the issue and work on the karma so that such events do not repeat on your journey.
कुछ लोग मैं देखती हूँ बहुत अच्छा, उनको मजा आता है पास्ट के बारे में बात करने से। पास्ट में तुमने ये गलती की थी, पास्ट में मैंने ये गलती की थी, पास्ट में ऐसा क्यों किया था, व्हाई डिड आई डू दिस, व्हाई डिडंट यू स्टॉप मी, व्हाई डिड दिस हैपन, ब्ला ब्ला ब्ला। इफ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट द पास्ट, नो प्रॉब्लम, बट बेटर इज टू ट्राई टू एनालाइज द रूट कॉज विद कामनेस। किया था, गलती हुई थी, समझ में आया, नाउ लेट्स इवेल्युएट क्यों किया था, कहाँ गलती हुई, क्या बेटर कर सकते थे, आने वाले कल में क्या रिपीट नहीं करेंगे। ओके। Moreover, no matter how painful the situation is, there could be a greater reason for it that you do not see now. There is an interesting episode in the Mahabharata that brings light to this situation. So कभी कभी हमारे जिंदगी में बहुत बुरा कुछ होता है, पर उसके पीछे एक अच्छी वजह भी हो सकती है. So instead of really regretting and pondering over the negative, sometimes you just have to leave certain things. कि जो हो रहा है कुछ अच्छे की वजह से हो रहा होगा. Let's leave it. Let's see what happens. Okay? This is one story from Mahabharata, which actually gives us a good example. King Shantanu proposed his intention to marry Ganga, for which she agreed on the condition that he would never question any of her action. Driven by the passion, Shantanu agreed to this. तो राजा शांतनु थे, उन्होंने गंगा से शादी करने के लिए पूछा. तो गंगा ने कहा कि ठीक है, हम आपसे शादी करेंगे, पर मेरे जिंदगी में मैं कोई भी फैसला लूं, आप मुझे कभी सवाल नहीं करोगे. अब शांतनु को तो शादी करनी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड. Later, Ganga gave birth to her first son. But soon after delivery, she took the newborn to the river and drowned him. So goddess Ganga, उन्होंने अपने पहले संतान को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, और थोड़े ही दिन बाद उसको ले जाके उन्होंने गंगा में बहा दिया. Bound by his word, the king did not ask anything. शांतनु द रूलर, उन्होंने कहा था कि हम आपकी कोई फैसले पे सवाल नहीं करेंगे, तो वो कुछ पूछ नहीं सके. A year later, when she delivered the second son, she drowned him too. दूसरे पुत्र को जन्म दिया और उसे भी गंगा में बहा दिया. And in this way, she drowned 7 newborns. 7 बच्चों को गंगा ने जन्म दिया और फिर उसे ले जाके नदी में बहा दिया. But when Ganga was about to drown King Shantanu's 8th child, 8वां बच्चा, he could not hold himself and shouted, "Stop! Let him live." Ganga stopped and said, "Since you have broken your word, I must leave you." उन्होंने क्या कहा था, हम आपसे शादी इसी बात पे करेंगे कि आप कभी मेरे कर्म के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे. पर क्योंकि उन्होंने इस बार उठाया, इसलिए वो छोड़ के चली जाएगी. The children whom I killed were 7 of the 8 deities, cursed to be born as mortals for the bad karma of stealing the sage Vaishishta's cows. On their request, I became their mother and tried to keep their stay on earth brief to save them from the misery of earthly existence. This 8th one you have saved and will live, but it shall be a life full of misery for him. So क्या हुआ था, कुछ देवताओं ने एक एक सेज है, एक संत थे वैशिष्ट, उनके काउस को चुराया था, और सेज ने, संत ने कर्ज दिया था, अभिशाप दिया था कि तुम 8 भगवान, तुमको धरती पे जाना पड़ेगा, मनुष्य रूप में पैदा होना पड़ेगा, और मनुष्य जो जो पछताते हैं, उनको जो तकलीफें होती है, वो सब तुमको झेलना पड़ेगा. तो लॉर्ड गंगा ने, गंगा ऑब्वियसली अपने आप में वो एक देवी है, जब उन्होंने ये सुना और उनके पास वो भगवान गए, 8 भगवान गए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों की माता बन के आऊंगी, मैं आप लोगों को जन्म दूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो जिंदगी है वो छोटा से छोटा हो सके धरती पे, तो भगवान को तकलीफ ना हो. लेकिन इस 8वें बच्चे को आपने बचाया है, अब ये 8वां बच्चा जिएगा,
और इसको जितनी तकलीफें जिंदगी में सहनी है उस कर्ज की वजह से वो ये सहेगा. So basically what happened? Lord Shantanu will have one child. Now Ganga left. He loved Ganga, but Ganga left. He had one child. And that one child will have a lot of suffering on planet Earth. Though he is a god, he's a manifestation or he's the incarnation of a god. So sometimes even the most painful event has a seed of a greater good within itself and brings benefit to all when the time is right. The story of the almighty King Akbar and his wise minister Birbal brilliantly illustrates this. एक और छोटी सी कहानी. So obviously first कहानी से हम ये समझ ही रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी में बहुत बुरा कुछ हो रहा होता है. It's terribly bad and we are upset and we are sad कि why is this happening? But it has a greater good behind it. So if you can say this now, if you can say this, thank you God for everything. If you can believe that God is doing everything for your good, if you can say let thy will be done, if you can have the faith that whatever is happening for the good, God is taking care of me, then you will be able to go through the negative things with more ease, with more happiness, calmness, faith, hope. You will not give up, right? So let's read the second story. This is a funny one. Once King Akbar and his minister Birbal went on a hunt. So राजा अकबर और उनके बहुत ही अक्लमंद मिनिस्टर थे बिरबल. हमने अकबर और बिरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं. एक बार वो जंगल में शिकार करने जाते हैं. Birbal was known for his sharp wit and great wisdom. While hunting, the king's finger got cut and made him distressed with pain. Instead of giving solace to the king, Birbal said, "O mighty king, everything happens for good." Hearing this, the king got furious and immediately ordered his soldiers to put the minister in jail. So यहाँ तक क्या हुआ? वो लोग शिकार करने गए थे, राजा की उंगली कट गई शिकार करते वक्त. तो उनको सहानुभूति दिखाने की जगह बिरबल ने कहा कि राजा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो राजा को गुस्सा आ गया कि अरे मेरी उंगली कट गई और तुम मुझे सहानुभूति दिखाने की जगह मुझे बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो उन्होंने अपने सैनियों से कहा कि बिरबल को जेल में डाल दो. एंड वो आगे अपने शिकार पे आगे बढ़ गए. After this, the king continued on his own, and it so happened that he was caught by a nomadic tribe that wanted to sacrifice him to their deity. तो जैसे जैसे राजा आगे बढ़ने लगे, वो जंगल में एक नोमैडिक ट्राइब यानी कुछ जंगली लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया. उन्होंने कहा कि हम अपने देवता को आपको बलि चढ़ाएंगे. ठीक है. Just before the sacrifice, the priest checked the king for physical wholeness and found that one finger was cut. So, यूजुअली बलि चढ़ाने से पहले हम लोग देखते हैं कि जिसकी बलि चढ़ रही है वो स्वस्थ है कि नहीं, वो भगवान को चढ़ाने लायक है कि नहीं. तो जब प्रीस्ट ने राजा की चेकिंग की तो उन्होंने देखा कि राजा का एक उंगली तो कटा हुआ है. तो फिर वो परफेक्ट नहीं हुए, उन्हें बलि नहीं चढ़ा सकते. Since a flawed body cannot be offered as a sacrifice, the nomads released the king. Saved from the jaws of death, the king returned to the palace and hurriedly summoned the minister and expressed regret over his unkind act. सबसे पहले राजा तो बच गया, उसकी बलि नहीं चढ़ी, वो घर वापस गया, पैलेस वापस गया, सबसे पहले बिरबल को बुलाया. Then the king asked Birbal, "It is true that my finger got cut for a good reason. But what was the good thing to imprison you for that?" Birbal smiled and said, "O king, you had not imprisoned me. I would have been with you, and since my body was whole, I would have been sacrificed in your place." होता तो मैं आपके साथ होता, आप पकड़े जाते, मैं भी पकड़ा जाता.
आपकी उंगली कटी हुई थी इसलिए आपको तो बलि चढ़ाते नहीं, मैं तो परफेक्ट था, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए आपने मुझे जेल में डाला, इससे तो मैं बच गया। So eventually, in this small incident, the king also got saved because his hand was cut, and Birbal also got saved because he was in prison. Otherwise, the king would have got sacrificed, and maybe Birbal also could have got sacrificed. So sometimes the cut of a finger can save you from a crucial death. कभी कभी एक उंगली कट जाने के वजह से आप अपने मौत को भी टाल सकते हो. Who knows that you are destined for a great danger? Do you know? Do I know? Does God know? God knows everything. So when my finger got cut, I can say thank you God for everything. थैंक यू कि ये मेरी उंगली मेरे को फाइनली जीवन तो रख देगा, मेरे को मेरा जीते जी मुझे बचा तो लेगा. समथिंग इज हैपनिंग. बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट योर फेथ? विश्वास, भरोसा. अगर विश्वास डगमगा गया तब तो कुछ नहीं होगा. हम रोते रह जाएंगे, मेरी उंगली क्यों कटी, मेरी उंगली क्यों कटी, हम रोते रह जाएंगे. Why did you cut my finger? Why did you cut my finger? But we will not have that faith that he must have saved my neck from getting cut. My finger got cut, so my neck got saved from getting cut. That faith is very, very important. And you know what? That's why, but this is my personal experience which I'm sharing with you. Coming together as a group is also very important. हम ये जो हफ्ते में 3 दिन कम से कम मिलते हैं और एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ वी डोंट मीट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी विल फॉरगेट इट. लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनीवन. हम सबकी उंगलियां कितनी बार कट रही है, कहाँ कहाँ कट रही है, वी डोंट नो. बट कट रही है, आई नो दैट. लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनीवन. एंड इफ यू कॉन्स्टेंटली गेट इनटू चैलेंजेस, यू विल फॉरगेट टू से थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. कोई इंसान इतना ताकतवर नहीं है जो प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम झेल ले बट फिर भी फेथ रख सके, ट्रस्ट रख सके. When I take the session, it is a reminder for me. When you are coming in the session, it is a reminder for you. The time is tough, things are going wrong way, but let's hold on to it. Let's keep on with that faith. Let's hold each other's hand. Let's look at each other and say कि आप अकेले नहीं हो. You're not alone. We are there with you. So I personally feel that this is like a good reminder, because sometimes you know how strong you are when life gets tough. People do break down. I have seen many, many people, very strong, very tough people breaking down when life really gets tough. But this is where, you know, the entire group comes together and kind of holds each other. So that's why I keep on saying that this group is very special to me. There are times when you must let go and accept things the way they are. If you resist and react, you will only cause more harm to yourself. The elders say, if your hands are trapped under the rock, pulling them out by force will only hurt your hands more. Therefore, have patience and wait for the right time. Amazing grace comes from a gentle acceptance of life simply the way it is. So, amazing grace comes from a gentle acceptance of life simply the way it is. कभी कभी हमें सिर्फ जेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो है जैसा है ठीक है. कोई देख रहा है, कोई इसका ख्याल रख रहा है. जब चेंज होना होगा तब चेंज होगा. When it is going to happen, it will happen. Let me accept the things as they are. And again, there is another story which is going to be a beautiful story explaining something. But mainly, you know, it is not only about life, but it's also about relationships. Acceptance in relationship is a great, great important thing. Your family members, they are what they are because of some reason. हमारे परिवार में जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब जैसे भी है, वो किसी वजह से वैसे हैं. If my mother is of a certain nature, God has made her of that nature
may be completely opposite to me. They are of that nature because of certain reason. हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम झगड़ सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सामने वाला उससे शायद बदलेगा नहीं. लेकिन अगर हम उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर ले, इफ आई एक्सेप्ट माई मदर जस्ट द वे शी इज, माई फादर जस्ट द वे शी इज, my husband, my wife, my children, my parents, my grandparents, my working colleague, my boss, they are what they are. If I can accept them the way they are, relationships and life will also become easier. क्योंकि भगवान भी तो ऊपर ये देखेंगे ना, चलो मैंने इसको एक टफ हस्बैंड दिया, टफ वाइफ दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने जो दिया एक्सेप्ट कर लिया, सो गॉड विल ऑल्सो हेल्प यू फर्दर, राइट? गॉड विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू फर्दर. But if you resist, if you struggle, if you fight, your energy will be lost, but nothing much is going to happen out of it. So, a lady, third story of the same chapter, a lady had a mentally challenged daughter. It was quite painful for her to accept this reality. Sadness gripped her heart, especially when she saw normal children with happy parents. One day, she enrolled the girl in a special school, and after initial training, she also joined the school to give support to the children. Over time, the lady who was sad and distressed about one special child joyfully assisted over 100 special children. It made her realize the true purpose of her life and helped to transform her adversity into an enriching experience. Also, the good karma she earned through her sincere love and devotion to helping children in need of love and care greatly enhanced her spiritual as well as her material life. So, ये छोटी सी कहानी क्या बोल रही है कि एक बार एक लेडी थी, उनकी एक डॉटर थी जो फिजिकली चैलेंज थी. सो ऑब्वियसली अपने फिजिकली चैलेंज बच्चे को देख के उन्हें बहुत तकलीफ होता था, स्पेशली जब वो नॉर्मल बच्चों को हैप्पी पेरेंट्स के साथ देखती थी तब. तो इस बच्चे को जब उन्होंने एक स्पेशल स्कूल में दाखिला कराया और उन्होंने खुद भी थोड़ी सी ट्रेनिंग ली अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए और वहां जो दूसरे बच्चे हैं उन सबको हेल्प करने के लिए, इवेंचुअली उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा ये काम. पहले वो सिर्फ एक बच्ची को हील करने में या हेल्प करने में परेशान हो रही थी, और अब वो 100 ऐसे स्पेशल बच्चों को खुद हेल्प कर रही थी, खुद उनका ख्याल रख रही थी, खुद उन्हें ठीक करने का कोशिश कर रही थी. इस प्रोसेस में उन्हें बहुत शांति मिला, उन्हें एक स्पिरिचुअल पर्पस मिला. फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली, मटीरियली शी ग्रू. तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने जिंदगी का एक पर्पस मिला. So this is how even life teaches us certain things. Now, obviously, goes without saying, if she had that retarded child, she must have had some karma. पुराने कर्मा के वजह से उनके पास एक मेंटली चैलेंज चाइल्ड था. पर अब उन्होंने 100 मेंटली चैलेंज चाइल्ड को हेल्प करके, डोंट यू थिंक उन्होंने अपना पूरा कर्मा न्यूट्रलाइज कर लिया? शायद आने वाले 10 जन्मों में उन्हें मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन मिलते, लेकिन इस एक ही जन्म में उन्होंने कर्मा को न्यूट्रलाइज भी कर लिया, उन्होंने पॉजिटिव कर्मा भी जनरेट किया. Lots and lots of things she did for her future incarnation. So she neutralized the negative karma, she generated positive karma, she helped so many people. Earlier she was distressed with one child, now she helped 100 of them. So sometimes things that happen in our life have greater purpose. You and I, at the human level, we really cannot understand that. So we must have faith and we must surrender by saying, thank you, God, for everything. Let thy will be done. I accept things that are happening in my life gracefully, happily, cheerfully. And whatever is happening in my life is happening for a greater purpose, happening for a greater good. If we can do this, life is only going to become better. Life is only going to have, open up its treasures for us. And if we resist, life can be very tough. Acceptance gives the power to face challenges and helps to manifest the hidden blessings in all situations.
So that is the first technique, that is the first art of life. A, acceptance. That really gives us greater power, greater strength. And also, I think God kind of, supports you more if He sees that you have accepted things, uh, having faith in Him. तो अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करोगे कि मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, प्याली जी जो देंगी हम ले लेंगे, आपको नहीं लगता मुझे भी तब ज्यादा लगेगा कि यार सामने वाला तो कुछ पूछेगा नहीं, मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करूंगी कि नहीं मुझे तो बेस्ट देना पड़ेगा, है ना? So if you trust someone, that someone has to be more responsible now. So if you trust God, if you say, God, I trust you 100%, 1000%, whatever you're going to give me, fully accept it with a smile. So God also has to be more responsible towards you now. ये बच्चा तो पूरी तरह से मेरे ऊपर सरेंडर करके बैठा हुआ है, इसका तो मुझे स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा. Okay, so let's try to be that special side for God, believing in Him, trusting in Him, and always saying the same thing once again. Thank you, God, for everything. Okay, so we will do the twin heart meditation right now. So, in the meditation, we will once again create this image that we are being able to accept things in our life. So, what I can say is, before we start the meditation, think of that one thing in your life which is the toughest right now. सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में अभी क्या है? Maybe one relationship which is giving you the most trouble, maybe your health, maybe your finances, maybe the something is going against you, या कोई चीज बार बार रिपीटेडली आपको हर्ट कर रहा है या आपके अगेंस्ट जा रहा है या फेल कर रहा है. ओके, थिंक ऑफ वन थिंग एंड विथ फुल फेथ कि whatever this thing is causing trouble to me, it has a greater purpose. Okay, it has something which is for the good. It is decided by God, so I accept this. ये जो भी मेरे जिंदगी में सबसे बुरा हो रहा है, ये वाला पर्टिकुलर चीज जो सबसे बुरा हो रहा है अभी, मैं इस चीज को हंसते हंसते खुशी के साथ एक्सेप्ट करती हूँ कि ये पक्का कोई अच्छी चीज के वजह से हो रहा होगा, पक्का भगवान जी इसको देख रहे होंगे एंड इससे कुछ अच्छा ही निकल के आएगा. आई विल वेट, आई विल वेट फॉर द गुड, आई विल वेट फॉर वट एवर इज देयर इन साइड इट, एंड आई विल बी पेशेंट. Okay, so in the meditation, we will sacrifice that tough thing to God. Okay, that is our agenda for the Twin Heart meditation today. So let's begin. Request everyone, gently close your eyes. Take a deep breath. Relax yourself. Together, we shall invoke. May the beautiful energy of the Twin Heart meditation, may the love, light, and power of the Twin Heart meditation help us, heal us today. Bless us with more acceptance towards our life, towards our relationships, our health, our finances, so that each one of us can, with a smiling face, say, thank you, God, for everything. Thank you for these challenges of my life, and thank you for solving them on my behalf. Thank you for helping me see the greater good in all that is not so good. In full faith, so be it, so be it, so be it.